A very good morning and welcome to one and all for online series lecture that is management and finance with the blessings of Almighty and Sri Sadguru Vaman Baba Maharaj. Today we are there over here for our online series lecture that is based on management and finance. We were dealing with the fourth sub module that only will be continued by today. But we'll be starting with the new sub part and which the concept is very important and which is very interesting for us. So you all are aware about that concept. That concept is communication over here. So before starting with the topic over here, I would just like to put a light on the things that is, okay, what does the term communication means to you? Or exactly how you will use the word that is communication. Where you will put the things. Communication means what? Exactly what does the term communication means to us? So communication is something where we direct out or somewhere in which we may find the data, we may collect the informations or talking to the person in a systematic manner, or something where we can say that key communication which brings in a rhythmic method, some proper rhythms where communication thinks that when two people communicate to each other, they found something very easy and stipulated manner कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करके ले रहे हैं, हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम लोग सिस्टमैटिकली एक प्रॉपर प्रोसेसिंग में या एक प्रॉपर वे में हम पर्सन से करके ले लेते हैं. दैट इज समवॉट द कम्युनिकेशन एंड डीलिंग विद द पीपल इन अ डिस्टेंट मैनर, वेरी डिस्टेंट मैनर. डिस्टेंट मैनर मतलब बहुत ही सिस्टमैटिकली हम लोग लोगों से डील करके ले लेते हैं, उनको जैसे चाहिए वैसे उनके हिसाब से सेट आउट करके ले लेते हैं. एंड वी ट्राई टू डू द थिंग्स इन अ ऑर्डर दैट कि बाबा मुझे प्रॉपर वे में वर्कआउट करना है तो आई कैन वर्क इन अ प्रॉपर वे ओनली. सेम सिचुएशंस है या the thing when I deal out, so I'll just deal with the things that is I'll just make a proper sequence of my communication, and I'll follow that sequence of communication with all, and the same communication method I'm going to see the situation. This communication is something that which maintains the relation among the people, correct? So this is somewhat will be things. I just found out the things that how it has to be done out, and how it deals with things. So this is somewhat what we does out, and secondly we can say that communication is the base for each and every mass media or a medium, which can be broadly divided. We want to think the things in a systematic manner, and in that manner itself we wants to follow the things, or we are going to follow up that things in a systematic manner. So this is somewhat what it is required to us, correct? So I just would like to say that communication plays very important role at each and every level of management, not only towards the management but also towards the communication which we does out, or where we think that we should place our values or our equations or the things which we does out. So that is what exactly the communication means to us, and we can deal with numbers of ways in a different factors, and we can get things done. So the medium of communication can broadly divided into two groups. Okay, so two groups कौन से रहेंगे? First हम लोग के पास verbal है, which we can speak out. Second one is non-verbal, which cannot be spoken out, but it can be identified out. जो हम लोग बोल के ले लेते हैं वो हमारे लिए verbal हो जाता है, जो नहीं बोल सकते वो क्या हो जाएगा? Non-verbal. Okay. Now verbal communication. Again, verbal communication is classified into two groups: oral communication and written communication. Oral communication is something where I can speak out whatever I want out, and written communication is something where I'm going to put something in written,
Correct. So what is an oral communication? Oral communication takes place in the various forms, such as oral communication in the form of discussion, when two or more than two persons comes together and discuss something. फोन कन्वर्जेशन, हमारा फोन कन्वर्जेशन भी एक डिस्कशन ही रहता है कि हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, हम लोग कुछ समझा के ले रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग समथिंग. Where we are presenting something, we have the sets of instructions, what we have, we put down the data and all. Correct. So oral communication में most important first factor here is instant feedback. In a face-to-face situation, the speakers can immediately get feedback from the listener, because I know now I'm talking to the person, and whenever I'm talking to the person, तो जो भी मुझे information चाहिए या जो भी मेरा data चाहिए मुझे या कुछ identify करके लेने का है, तो easily I can get connected, or whatever I want, I can get done from the things. कि from the person what I want out. This is the way, in this way I'm going to react out, or in this way I'm going to need out. The things how I found out for myself, that will be the requirement. Speaker can instant response from the listeners. Quickly, very quickly will get the response. Whether he has understood the message or not. देखते ही हमको समझ में आ जाता है whether he is able to get or not. And if he is able to get or he is getting out, then favorable impression is there on the receivers or not. Means he will be showing us a positive reward only. Quickly, very quickly, positive reward will be there. What is happening out and how it has to be there, or what the thing people thinks out over here. Pervasive in nature, persuasive in nature. Speaker can judge the reactions or a response of audience and accordingly can shift the arguments. May provide the clarification also. Because persuasive is what on the moment. When I'm talking to the person or when I'm dealing something, automatically I'll just come to know that what another person is saying out or exactly what he needs out. How I need to behave them, or what are the ways in which I can deal them in a. So some argument or some clarification may be provided to the things how it has to be done or what is done. To persuade and to include the recipients of message, or we can say that to accept the message and to get accordingly, to react accordingly. जैसे हम लोगों को चाहिए वैसे हम लोग उसको react करके ले सकते हैं. That saves the time. Definitely it is going to save the time. Because I know what is happening out और कैसे वर्कआउट हो रहा है. तो जब मुझे पता है कि वर्क कैसे हो रहा है या मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, according to my requirement I may turn up, I may find the things in a very systematic and easy method. Correct. तो वो मेरा टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है कि मुझे जैसा काम चाहिए वैसे मेरे को मिल गया ना, तो जैसा काम चाहिए वैसे मिल गया तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है यहाँ पे. तो मुझे किसी से फीडबैक लेना है या बात करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आई कैन गेट द थिंग्स डन एज आई वांट आउट. ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी मच लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेस है इसमें. जितना हम लोग मैनेज करके चलते हैं ना उतना ही टाइम कम मैनेज हो जाता है, इजीली इट इज मैनेजेबल. इफ द नंबर ऑफ केसेस वेयर क्विक डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है डिसीजन बहुत जल्दी रिक्वायर्ड है, या ओरल कम्युनिकेशन एडवाइजेबल है कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा ना, तो इजीली यू कैन टफ आउट और यू कैन गेट द थिंग्स डन. So words can be easily understood or as they are spoken to us. Communication, that is oral communication, is very less expensive. No more amount can be taken out or the things can be done. Oral communication is less expensive as compared to the written communication. बहुत ही खर्चा नहीं है उसमें, कुछ भी खर्चा नहीं. It does not involve expenditure on the stationery equipment as computers, printers, कुछ भी हम लोगों को लगने वाला नहीं है इसमें. Okay. Coming towards the second part over here is written communication. The things which we write down are the data which we cover up. That is the written communication. So we have the legal evidence for that. Proof. जो भी मैंने डेटा लिख के रखा है उसका हर चीज़ों का मेरे पास एक प्रॉपर प्रूफ रहता है कि आई हैव डन सो एंड सो वर्क, आई एम डूइंग सो एंड सो थिंग्स in a systematic manner, I am managing the things and all. That is what it is required. So we need the legal evidence for that. So written communication deals as a legal evidence in the court of law. मैं दिखा भी सकती हूँ ना कि मैंने ये लिखा है, ऐसे से लिखा हुआ. Written communication bears the signature of senders and the writer.
जो भी लिख के रखा है हम लोग जो भी रिप्रेजेंट करके ले रहे हैं वो हम लोगों के लिए वे हो जाता है कि हम लोगों ने क्या क्या उसको लिख के लिखा है। साइमल्टेनियसली इट एक्ट्स एज एन परमानेंट रिकॉर्ड ना, कि जो भी डेटा मैंने पुट डाउन किया है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई कैन प्रिजर्व दिस। प्रिजर्व मतलब संभाल के रख सकती हूँ एज एन रिकॉर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन पीरियड। इफ नीडेड इट कैन बी रेफर्ड इन फ्यूचर फॉर डिसीजन मेकिंग, कि फ्यूचर में मैं डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करके ले सकती हूँ व्हाट आई वांट और हाउ आई कैन डू द थिंग्स। इट इज ऑलवेज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में डेटा जो रिटर्न है या मुझे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर वे में जाता है एंड आई कैन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट आई गेट दैट आई कैन प्रोवाइड आउट, ना कि शॉर्ट में या लॉन्ग में जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा मेरे डेटा को भी पुट डाउन करके दे सकती हूँ। आई कैन राइट डाउन द डेटा। Written communication is also the writer or the sender can provide clear and specific information। जो भी information मुझे देने हैं ना वो बहुत clearly बहुत specifically हम लोग manage करके दे सकते हैं। Step by step each and everything is being done or given to the thing। वाइड सर्कुलेशन कैन बी डन ना, अगर रिटर्न इन्फॉर्मेशन है या हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट डाउन किया है तो जितना वाइडली मुझे जाने का उतना वाइडली मैं जाके कर सकती हूँ। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा डेटा पास आउट हो सकता है। नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑर्गेनाइजेशन के जो जो डिफरेंट पार्ट्स है ये जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है वो ब्रांचेस में भी तो हम लोग जा सकते हैं ना। करेक्ट। तो मेरा इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है या मुझे पुट डाउन करने का है वो इजीली आई कैन पुट डाउन, जिसके भी सामने मुझे डालना है, जितने भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन डालने हैं वो इन्फॉर्मेशन हम लोग सब पुट डाउन करके ले सकते हैं। So that's all for today. This is communication part. If anyone is having any doubt, they may ask me and get cleared with the information whatever they wants out. So that's all for today. Rest we'll see by our upcoming lectures. Next topic and the communication whatever we want out. Till then, take care of yourself and your family. Stay home, stay blessed. Thank you so much. Thanks a lot.